एवरीवन, दिस इज सोनिया हियर फ्रॉम ग्रोइंगक्राफ्ट और आज हम करने वाले हैं डिकोपाज आज सिरेमिक बेस के ऊपर। सो इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग कि हमने कोई नए सरफेस पे किया था, तो वी थॉट ऑफ शूटिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। सो पहले हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं जेसो एंड मीनवाइल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नाउ कमिंग बैक टू ट्यूटोरियल, यहाँ पर हम अपने बेस को प्रेप अप करेंगे विद जेसो एंड आपको मेक श्योर करना है दैट यू apply good generous coat of gesso and dry that with your heat gun, and you have to cover your complete ceramic base with the gesso. It's very important. जो भी supplies मैंने use किए you can check them on our website and सबके list and links मैंने video description box में डाल दिए हैं. So this is how मैं अपने पूरे ceramic container को cover करने वाली हूँ. So this is going to be a soap dispenser and I have planned this for my daughter's bathroom. And I hope she loves it. So I'm super excited. अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो तो let me know in the comment section if you are making something similar for your kids, for your family members or for your friends. जेसो वर्क हमारा ऑलमोस्ट हो गया है एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू चूज अ डेकोपाज नैपकिन. ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था बट आई कुड डू इट एंड दिस इज द ब्यूटीफुल नैपकिन व्हाट आई हैव. Do check out our website because we have the huge collection of decoupage napkins. As you know me, मैं decoupage napkin बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ. मैं decoupage papers बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ. I always keep even the small pieces of papers and napkins. So यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ and I'm being a little precise here ताकि मैं ज़्यादा वेस्ट ना करूँ. And once I cut it, then I am going to stick it on my base. बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि डिकोपाज नैपकिन की प्लाईज क्यों हटानी है. नाउ आई नो मोस्ट ऑफ यू नो कि प्लाईज हटानी है बट क्यों हटानी है बहुत से लोगों को नहीं पता है. सो आई जस्ट रिपीट इट वंस अगेन. जब आप किसी पेपर का लेयर स्टिक कर रहे हैं, अगर उसमें 2-3 लेयर्स ऑलरेडी हैं तो उसमें बहुत सारा बबल्स एंड रिंकल्स आएगा. टू अवॉइड दैट you need to remove the decoupage napkin layers. That's why it is very important. So अब हमारा कटिंग वर्क हो जाने के बाद हम इसको स्टिक करेंगे. ऑफ कोर्स प्लाई निकालना तो ज़रूरी है, अभी तो मैंने आपको बताया क्यों निकालना है, राइट? So yeah, I will use my decoupage glue and you can even use your Mod Podge decoupage glue or the mediums what you like. I even like using acrylic gel medium. They also work pretty fine. सो लाइक ऐसे जो भी सप्लाईज मैं यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं. सो प्लीज़ डू चेक दैट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इसको स्टिक कर रहे हैं. प्लीज़ बी जनरस व्हेन यू आर स्टिकिंग दिस वन. जब भी मैं डिकोपाज नैपकिन स्टिक करती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई हैव अ ड्राई ब्रश विथ मी, द ड्राई फ्लैट ब्रश या फिर एक स्पंज डॉबर हमेशा हो, सो दैट मेरा स्टिकिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है. जस्ट इन केस इफ़ यू आर कन्फ्यूज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ पूरा एक complete tutorial that why I use my paint brushes or my sponge dauber while sticking it and how I use it so that it's clear for you. आपको एक बार वो टेक्निक आ गई then you don't have to worry about anything else. And whenever you're working on surface, I prefer to do it like one layer at a time so that it's easy and it's convenient. आप एक बार में adhesive मत लगाइए, otherwise वो stick करना बहुत difficult हो जाएगा. So once I am done with this sticking part, then we will move on to the coloring part. Now one of the very common question is which supplies to use. That's the reason हमने description box में सारे links दिए हैं, आप वो check कर सकते हैं so that it's easier for you guys to decide कि क्या supplies चाहिए, क्या material चाहिए. I know someone came and told me कि हमने poster color लगाया था and my project got ruined. So poster colors, acrylic colors cannot be used for your decoupage and your mixed media art. You have to use your chalk paints. अब हम थोड़ा और sticking कर लेते हैं and then I will tell you one more technique. So I have seen a lot of people using plastic sheets for sticking these. अगर आपको चाहिए, if you are not very comfortable with your brush and your fingers, you can just have a plastic sheet after applying your decoupage glue or Mod Podge. Stick your napkin and then just press it with a plastic sheet and it will just smoothen up. आपका जितने भी wrinkles, bubbles हैं, everything is just going to come out. So डिकोपाज नैपकिन लगाने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से ड्राई करें. यू हैव टू मेक श्योर जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन हो वो हटा दें. एंड मीनवाइल डू चेक आउट आवर फेसबुक पेज, फॉलो अस एंड यस. सो दिस इज डन. आई एम गोइंग टू यूज माई हीट गन टू ट्राई दिस. लाइक ये तो ऐसा रामबाण वाला टूल है ना जो
I think everyone should have. If you are into crafting, you should have heat gun. So थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पेंट्स के बारे में. So here I am with my paint. I did not wanted the typical dab 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 करके पेंट ब्रश लगा के एकदम फ्लैट ब्रश. So I just thought I'll just use my brush randomly and make a beautiful texture out there. So I'm going to cover only the top part, and then I'm just going to leave some white spaces and clean it up and make it as beautiful as I can. So ऊपर में मैंने decoupage napkin नहीं लगाया है because I just wanted to highlight the top part of my bottle, and like I said, all the supplies are there on our website. Check करना मत भूलिएगा. So again, I'm using my heat gun, my Ramban. Okay, now moving on to the next step after this drying process is my massive stamping. इसके बिना तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ आप मुझे बताइए. So here is my massive stamping. I'm using my permanent ink pad. Please do not use your dye-based ink pads. It will bleed the moment you start adding your another layer or you varnish it. So use your permanent ink pads. I'm using the brown shade of my ink pad because I just thought of adding some drama to it. अब हम इसको सील करेंगे हमारे वार्निश के साथ, एंड आई एम गोइंग टू हैव गुड 2-3 कोट्स ऑफ वार्निश. मीनवाइल इंस्टाग्राम भी चेक कर लीजिएगा प्लीज, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू. Now finally I am just doing my final coat of varnish. You need to have at least 2 to 3 coats of varnish for this project. So usually what happens is जब आप varnish लगाते हैं, it takes time to dry out, then you have to wait for some time, then the second coat and then the third coat. As it's a soap dispenser or a cream dispenser, it is going to be there in some moist area in your bathrooms or your kitchen, or in some moist area. So you have to make sure that you seal this project really well. So I really hope you guys enjoyed this tutorial. Do let me know your feedbacks in the comment section, and this is how it looks like. Please do comment and let me know if you like this project. Thank you, and do enjoy crafting, do a lot of shopping, and create a lot of handmade gifts. And thank you, and take care, and bye bye.